traffic, okay? It is tariff system. घर में बिजली का बिल आता है? Yes. আমরা সবাই দিই বাড়িতে বিল আছে। There are different type of loads are there. One is industrial load, another is domestic load. Definitely, our industrial load tariff system would not be same to that of the domestic load tariff system. Exactly. एक इंडस्ट्री में जो बिल का जो तरीका होगा वो डेफिनेटली वो घर के बिल की तरह नहीं होगा। ऑलराइट, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ सिस्टम्स आर देयर। वन सिंपल टैरिफ, टू फ्लैट रेट टैरिफ, now what is simple rate tariff? Simple rate tariff is nothing but suppose you consume 5 kilowatt hour of energy and you have been charged at the rate of 1 rupees per kilowatt hour. All right, even if you spend or consume 50 kilowatt hour of energy, the rate will be same at the rate of rupees 1 per kilowatt hour and the amount will be 50 rupees. All right, simple rate tariff. तो मैं जो देखते हैं रेशियो जो कंज्यूम करो, इवन अगर आप लोग इससे भी ज्यादा भी कंज्यूम करते हैं तो आपका रेट जो है वो नॉर्मल है। दैट इज सिंपल रेट टैरिफ। ऑल राइट, now next flat rate tariff. Flat rate tariff. In this kind of tariff system, different types of consumers they get the bill at different rate. All right, how? बगल में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को एक रेट पे मिलेगा, थोड़ा सस्ता में दिया जाएगा उसको। ओके, एंड फॉर द डोमेस्टिक लोड द रेट ऑफ द बिल इज डिफरेंट। दिस इज फ्लैट रेट टैरिफ फ्री। ब्लॉक टैरिफ, ब्लॉक टैरिफ सिस्टम, ब्लॉक टैरिफ सिस्टम। इन द ब्लॉक टैरिफ सिस्टम a huge block of energy, don't write right, no need to write, I will give you notes. A huge block of energy is been given to you. All right, suppose you have been given 5 kilowatt hour of energy. Even if you spend 5 kilowatt hour, you have to pay totally for 500 kilowatt. Are you okay? समझ में आया? Yes. Now, in case of block rate tariff, this is the block rate tariff. Okay. तो आगे 500 kilowatt hour एनर्जी दिले वाले हैं। till 500 kilowatt hour तुम्हें जो तो खुशी पड़ता हो, कोनो आलादा चार्ज হবে একটা ही চার্জ থাকে। তুমি যদি 1 kilowatt hour যদি খরচ করো, তাও একই চার্জ দিতে হবে, that is for the 500 kilowatt. That means a block of energy has been allotted for you. Clear? Any confusion? Any confusion? No? Next, maximum demand, or you can say two-part tariff system. What will be the two-part tariff system? Please, better silence. What will be there in the two-part tariff system? In two-part tariff system, two-part tariff system, A into kilowatt plus B into kilowatt hour
That means A is the maximum demand of the consumer. Maximum demand. Suppose the maximum demand you are using is 20 किलोवाट. इसी एक महीने में आप लोगों ने या आपका टोटल मैक्सिमम डिमांड किलोवाट है 20 किलोवाट. ओके. नाउ this will be this A will be 20 into kilowatt plus B is the total energy you are using kilowatt hour. In a particular month, suppose you have, say for the month of October, your energy is 5 kilowatt hour. So this will remain fixed for each and every month. This is 5 kilowatt hour. For the month of October. Say for the month of November, this 20 will remain fixed. This 20 will remain fixed. It depends upon the maximum demand. Rest in the month of November you have used 10 kilowatt hour. Alright? This type of tariff system where the tariff bill is being broken into two parts, this is called two-part tariff system. Alright? Any confusion? No, sir. Next. So, next.